Shut up. Hey Bhagwan. The focus was being some shield. I don't think I'm going to be in touch with anyone. Shut up. I really love her. They were in the same bathroom, Aisha. Shut. Yet another episode of Shut Up with Tejasvi. I have the muscular, the popular, the actor Harshad Chopra. You are such an unexpected person for me to see so soon, to be very honest with you. मेरा गेम जो था ना वो नो गेम था. मेरे को लगा था it was a show where you are going to be yourself. Like I was not worried कि लोग देख के क्या सोचेंगे. The only one side which I did not want to show people was the emotional side. But वो आ ही जाता था कभी ना कभी. कभी ना कभी पता चल गया दुनिया को. फूक फूक के कदम रख रही हूँ कि अगर मैंने कुछ पूछ लिया हर्षद फिर से रो ना दे. हे भगवान, यहाँ नहीं, अब होपफुली नहीं होगा, मेरा पेट भरा हुआ है. So initially my biggest struggle was to figure out whom do I like the least. You know, I thought completely opposite. मैंने बोला let's start from, you know, तो लिस्ट बन जाएगी. लिस्ट से चालू करूंगा तो अपने आप वो पहुंच जाएगा. आपको जब भी आप घर के अंदर आए थे तो आपका टैग था अनग्रेटफुल एंड इनविजिबल. Now I have to give it to you that you were not invisible for sure, but I felt, is he being ungrateful when I was watching you? Because you've got such a fantastic platform. You've got great following. Right. So instead of playing your game, showing us different sides of you, I felt like the focus was being somebody's shield. I think, you know, because we have been friends from like a little while, and when we got into that kind of a scenario where there are 15, 16 people and that kind of a tough scenario where food is less and it's a little challenging, वो automatically कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया कि I'm doing what I'm doing. बहुत लोगों की अलग अलग नंबर वन्स होंगे पर आप और शिवांगी के नंबर वन बहुत एविडेंट थे. करेक्ट. कि we will always be each other's priority. That's why मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हर्षद को नंबर वन पे रखने की जरूरत है. Correct. तो do you feel like somehow that you missed out on something different that you would have done? Imagine a scenario without her. I think the game would have been completely different. Yeah. See, Dheeraj also was there, Ram sir also was there, Sunita ma'am also was there. मुझे कुछ भी, जैसे if I want to ask a question, I'll go to Ram sir. वो तो 2 दिन पहले पता चला कि राम सर तो इधर भी और उधर भी. हाँ. वो I never thought like that. But if I ask you one question, will you answer honestly? I will. Are you and Shivangi dating? Yeah. I really love her. Shut up. But I'm not in Shut love up, with you her. love her. I'm not in love with her. वो हम There is काट a देंगे. difference. वाह वाह, जो फंसाया है. तो जब भी कंट्रोलर्स बने थे, इंडिपेंडेंट्स बने थे, शिल्पा जी ने एक बहुत अच्छा टास्क दिया था कि you both will never talk to each other. उसको टास्क दिया था. शिवांगी She को will दिया not था. talk. She will not talk to you. What do you think of Shilpa ji as somebody who said that, like who's given that as a task? I was like, how can she? And I was like, okay, she has said this to her. मेरा जो टास्क मास्टर था, लाइक मेरा तो जो नहीं बोला है. हाँ. उसने नहीं बोला है, तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें बात करना अलाउड नहीं है तो मैं बात करूंगा, तुम्हें बैठना है तो मैं बैठूंगा. आई डोंट थिंक हमारे ऐसा कोई डिफरेंसेस है. आई थिंक दैट the thing was, I don't know what problem she had with Shivangi. You know, she did speak a lot of weird ill things. अभी भी मुझे उनका जो टेक है towards her, I do not like that. मेरे को खाने उनके हाथ के दर पे पोए, बट उसके लिए उन्हें शिवांगी की बुराई करनी बंद करनी पड़ेगी. Do you think your fans are going to be disappointed, or you think they're going to be like really proud of you? From the time I had decided, I knew they will be, nahi, ye galat kar raha hai, he should not do it, he's not meant for this. You know, earlier there used to be interviews and I get to show them a little bit of me apart from the acting part. So I thought this will be that platform where they will get to see a little bit of me. And they saw Pookie Chopra. They saw and you Pookie. All kind of Chopras. Laila and Yogesh, हम लोगों ने एक टास्क किया था, सब लोग भाग के आए. They were in the same bathroom having shower. Shut up. ये तो बचपन में करते थे. They are still kids. I understand their भाईचारा, and bro code बहुत solid है, and I believe, I really love people who are bro code. Yeah, पर आपके bro code का क्या हुआ जब आपके सारे bros ने आपका नाम दिया? I think they knew I'm going to go back to my cocoon, never see, never meet.
they will never have to answer me. So Ah. So Not you're the a confront- easiest person to. I'm not a confrontation person. I don't even confront my emotions at times. Very But nice I name to do have. fight. Okay, but my way of fighting is very different. I've had issues with people. I just stop talking about it. I make my point. I will stand still. It's more of defending myself than really fighting. आपके जगह पे आपको लगता है, या ऐसे कह दीजिए कि आपके साथ साथ कौन एलिमिनेट होना चाहिए? राम सर, क्योंकि ना बेवकूफ बनाया उन्होंने मुझे। 2 दिन पहले मेरी आंखें खुली है, मैं सोचता था भगवान है, ये तो प्लेयर निकले। So this section is called guilty punishment part. तो आपके 3 नाम है राम, चमोला एंड शिवांग. Punish Ram sir. Like you will not trim your beard anywhere else apart from bathroom, right? And that's not a responsible thing to do. अब she's not guilty really यार, चमोला. But she's not अनसंस्कारी. कहाँ वो अनसंस्कारी? कोई हरकत नहीं है उनकी. So she is pardon. Shivangi is boring. She's not really boring, but yeah, she's guilty. She's guilty. She is guilty. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है स्पिल ऑफ. तो मुझे आप 3 ऐसे नाम बताइए जो अभी घर के अंदर है, जिन्हें आप बाहर की दुनिया में कभी नहीं देखना चाहेंगे. I don't think I'm going to be in touch with anyone, but It's not about in touch with anyone. It's about would you want to see them? I will not meet them. You will not meet them. None of them. फिर भी आपने दाल पी ली. इसीलिए तो पिया. मुझे लग रहा है आपको बस भूख लगी है. अच्छी थी दाल. It was nice. I'm going to drink all. Let's go. Reveal your third seek. I'll drink it यार. क्या रिवील करूं? Okay. Guess who said this? Okay. शिवांगी हर्षद को सिर्फ यूज कर रही है. शिल्पा जी. ठीक है, अभी मत. That was a correct answer. वो सामने बोलती है ना, आज भी बोल रही थी वो बैठे बैठे, और मैं सोच रहा था मैम क्या बात कर रही है, कैसे कर रही है. But I hope you had fun. I really Yeah, do you I feel really was better? thinking what will happen. You never know. अगली बार मेरे सामने यहाँ कौन होगा. Until then, keep watching Lock Up. सच या सजा on. एक्टर अर्थर चोपड़ा कोई सवाल देने से पहले चुन लेते हैं. क्या पिलाना चाहते हो, क्या खवाना चाहते हो, सब खा जाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे. क्यों? ये तो अर्थर चोपड़ा जानता है. इसी के साथ में हमारी नेक्स्ट स्किन पर जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो एक परफ्यूम है. एक ऐसी परफ्यूम जो लड़कों के लिए एक्टिव बनाती है. लड़कियों एक्टिव हो जाती है जब भी लड़कियां ये खुशबू सूंघती है, एक्टिव हो जाती है. और इसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं एक्टर हर्षद चोपड़ा के बारे में, जो बार बार शराब सुनने के काफी मूड में थे, क्योंकि कुछ सही नहीं बता पाए, बताना भी नहीं चाहते थे. और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए. जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल. लेकिन प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके लिंक बोल देना, मैं आपको ये परफ्यूम दिला दूंगा.